Good morning, students. Today we'll do worksheet 6. So here we have word problems. And word problems के लिए उनको read करके understand करना बहुत important है. So let us read first question. Rahul had 2,359 stamps. Out of these, 1,985 are Indian stamps and the rest are foreign stamps. How many foreign stamps did he have? So let us find the given information. First number is 2,359 stamps. Rahul had this much of stamps. Total stamps Rahul के पास कितनी है? इतनी है. Out of these 1,985 are Indian stamps. इनमें से जो total stamps हैं, इनमें से 1,985 Indian stamps हैं. And the rest are foreign stamps. और जो बाकी उसके पास स्टेम्प्स बच गई वो फॉरेन स्टेम्प्स मीन्स फॉरेन मीन्स विच आर नॉट ऑफ आवर कंट्री, जो दूसरी कंट्रीज की स्टेम्प्स हैं वो उसके पास हैं. सो हाउ मेनी फॉरेन स्टेम्प्स डिड ही हैव? सो वी हैव टू फाइंड दैट हाउ मेनी फॉरेन स्टेम्प्स डिड ही हैव. तो इसके पास राहुल के पास टोटल इतनी स्टेम्प्स हैं. इनमें से इंडियन स्टेम्प्स 1985 हैं. अब जो बच गई विच आर लेफ्ट दैट आर फॉरेन स्टेम्प्स. So how can we find how many foreign stamps are there? By subtracting. Yes, हम क्या करेंगे? इस नंबर से टोटल नंबर ऑफ स्टेम्प्स में से हम इंडियन स्टेम्प्स को माइनस कर देंगे एंड द लेफ्ट विल बी नंबर ऑफ foreign stamps. Yes. So let us solve it. So total number of stamps Rahul had is 2,359. And number of Indian stamps. How many Indian stamps he has? He has 1,985 Indian stamps. So let us write number of Indian stamps 1,985 Indian stamps are there. So now rest are foreign stamps. So number of foreign stamps that he has, we need to find that. And how can we find that? By subtracting. Yes. अगर हम इनको माइनस कर दें, जो इंडियन स्टैम्प्स हैं इनको हम निकाल दें, so what will be left? Number of foreign stamps. तो इसको हम माइनस कर देंगे. We'll subtract 1,985 from 2,359. तो इसको हम माइनस करते हैं. So here we have 9 minus 5. 9 minus 5 is 4. Here 5 is smaller than 8. So we need to borrow. So it will be 10 plus 5. 15 and 2 will be left here. So 15 minus 8. It will be 7. Yes. Now again 2 is smaller than 9. So again we need to borrow. So it will be 12 and 1 is left here. So 12 minus 9. Here we get 3. And 1 minus 1 is 0. Yes. So what is the answer? 374. Yes. So how many foreign stamps he has? 374. So Rahul has 374 foreign stamps. Now let us read question number 2. Question number 2 is, a poultry farm had 4,721 hens. If 2,917 hens were sold out, how many hens were left in the poultry farm? So earlier the poultry farm had 4,721 hens. Means total कितनी hens थी? इतनी hens थी वहाँ पर. And if 2,917 hens were sold out, इतनी बिक गई, इतनी उन्होंने बेच दी. Now how many hens were left? So how to find how many hens were left? Yes, by subtracting. हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे. इस नंबर को अगर हम माइनस कर देते हैं, then the number left will be number of hens that are left. Yes. So let us solve it. Here we have number of hens in poultry farm 4,721. Number of hens sold
2917, and to find out number of hens left, we'll subtract it. You can easily subtract it and we'll get 1804. So this means 1804 hens were left in the poultry farm. Now question number 3 is, Mrs. Renu wanted to buy a mobile for rupees 8755, but she had only rupees 2990 with her. So how much more money does she need? मिसेस रेनू को फ़ोन खरीदना है, मोबाइल खरीदना है उनको, एंड what is the cost of that mobile? It is rupees 8755. इतना कॉस्ट है उसका, बट शी हैड ओनली रुपीज़ 2990. उनके पास अभी इतने ही रुपीज़ हैं, एंड विच इज़ लेस देन दिस, तो अभी तो नहीं खरीद सकती वो. सो हाउ मच मोर मनी डज शी नीड? तो फ़ोन खरीदने के लिए, मोबाइल खरीदने के लिए उनको और किस अमाउंट की ज़रूरत है, कितने मनी उनको और चाहिए, how much more. So when we find how much more, how much less, when we compare, then always we subtract. Yes, हम माइनस करते हैं कंपेयर करने के लिए. तो हमें how much more money does she need, ये फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, माइनस करना है. So you can easily subtract it. Okay, it is clear that we have to subtract this number from this, and the amount that we'll get is the amount of money that she needs. Okay, now question number 4 is, in a hall there are 2855 seats. In a particular day, 2096 people attended a meeting. How many seats were vacant in the hall? In a hall, कोई बड़ा सा हॉल है, मीटिंग हॉल है, there are 2855 seats. उसमें कितनी सीट्स हैं? टोटल 2855 सीट्स हैं. On a particular day, 2096 people attended a meeting. कितने लोगों ने अटेंड की मीटिंग एक दिन? 2096 people attended. Okay, now how many seats were vacant in the hall? Vacant means empty, which are not occupied, जिनके ऊपर कोई नहीं बैठा है. तो टोटल इतनी सीट्स हैं. अब 2855 सीट्स हैं और 2096 पीपल वहाँ पर आते हैं, तो कुछ सीट्स वेकेंट बच गई. सो वी हैव टू फाइंड दैट हाउ मेनी सीट्स वर वेकेंट. सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू सब्ट्रैक्ट. यस, हम माइनस करेंगे. विल सब्ट्रैक्ट 2096 फ्रॉम 2855, and the difference will be the number of seats that are vacant. So you can subtract here also, and you can solve these questions easily.